Ghosh, and in today's lecture, we're gonna start with the chapter पार्ट शेयरिंग। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज अब अभी आपकी प्री बोर्ड्स हैं, राइट? तो वन सेकेंड, आई जस्ट टेक द पेन कलर। सो अभी आपकी प्री बोर्ड्स है, राइट? एंड अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर योर प्री बोर्ड्स। तो हम क्या करेंगे, हम साथ साथ पढ़ेंगे भी, बट विल नो मेक क्वेश्चन, मतलब आप अपनी आंसर राइटिंग भी करते रहेंगे, क्वेश्चंस, सो दैट यू प्रैक्टिस योर आंसर राइटिंग, राइट? तो अभी हम लोग मतलब साथ में पढ़ेंगे भी, प्लस हम क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। दिस इज फॉर सीबीएसई क्लास 10th। तो टॉपिक्स देख लेते हैं। स्टोरी इन बेल्जियम, स्टोरी ऑफ श्रीलंका, majoritarianism in Sri Lanka, accommodation in Belgium, why partitioning is desirable and forms of partitioning। तो आज हम तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ बेल्जियम, स्टोरी ऑफ श्रीलंका एंड majoritarianism in Sri Lanka। तो हम स्टार्ट करते हैं। So story of Belgium. So Belgium is a small country in Europe which has a population of a little over 1 crore। So बेल्जियम बहुत ही छोटू सा कंट्री है, बहुत ही स्मॉल कंट्री यूरोप तो जिसका पॉपुलेशन है लिटिल ओवर, मतलब 1 करोड़ से कम। So the ethnic composition of this small country is very different groups, ethnic composition of different groups of people, ना जिनका caste मतलब उनका जो composition है, it is very complex, बहुत complex है। So out of the total population, the country 59% lives in Flemish region and speak Dutch। तो 59% जो है वो मतलब फ्लेमिश रीजन में रहते हैं एंड दे स्पीक द लैंग्वेज डच, ठीक है। अनदर 40% लिव इन वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। रिमेनिंग 1% बेल्जियम स्पीक्स रशियन। तो 40% क्या हो गया, जो वलोनिया रीजन में है वो फ्रेंच बोलते हैं और जो 1% रह गए हैं वो जर्मन बोलते हैं। In Belgium's capital Brussels, 80% people speak French and 20% जो person है they speak Dutch। तो क्या होता है, बेल्जियम में जो कैपिटल है which is Brussels, ब्रसेल्स में 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच, एंड 20% बोलते हैं डच, ठीक है। The minority French speaking community was very relatively rich and powerful। तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग मतलब बहुत ही कम जो माइनॉरिटी वाली ग्रुप है, जो कम्युनिटी ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग बहुत रिच थी, रिलेटिवली रिच और पावरफुल भी थी। दिस मेड डच स्पीकिंग एंग्री एज दे बेनिफिट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो क्या हो गया, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो आगे है ना, तो डच बोलती थी विच वाज इन मतलब जो 59% है ना। तो एंड बेल्जियम जो ब्रसेल्स के कैपिटल, बेल्जियम का जो कैपिटल ब्रसेल्स, जो 20% डच स्पीकिंग एंड 59% जहाँ पे हियर इन दिस फ्लेमिश रीजन इन बेल्जियम, उनको बहुत गुस्सा आ गया, they also wanted to benefit, मतलब उनको भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन चाहिए था, बिकॉज they were also equal at the time, मतलब at a time नहीं, अभी भी it is equal, sorry guys, मेरा मतलब उस टाइम नहीं जब इक्वल सबको इक्वालिटी चाहिए थी ना, in that way। So during the 1950s and 1960s, tensions between the Dutch speaking and French speaking communities created due to this differences। So टेंशंस बढ़ने लगे दोनों के बीच 1950 और 1960s में, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच, मतलब ऐसे काइंड ऑफ वॉर आ गया था। तो दिस वाज स्टोरी ऑफ बेल्जियम। अब हम स्टोरी ऑफ श्रीलंका में जाएंगे। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन साउथ ऑफ इंडिया हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ पीपल। तो 2 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, एंड इट्स मतलब इट इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ इंडिया having diverse population। The major social groups of the Sinhala are the Sinhala speakers 74% and Tamil speakers 18%, है ना।
The Tamils are divided into two groups: Sri Lankan Tamils, 13%, Tamil natives, and Indian Tamils. Came from India during colonial as plantation workers. So most of the Sinhala speaking people are Buddhists, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. There are 7% Christians who are Tamil and Sinhala. तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने दो स्टोरीज पढ़ी. um, हमने पढ़ी बेल्जियम और श्रीलंका, है ना. अब बेल्जियम जो है स्मॉल कंट्री, है ना, और ये भी साउथ में है. जिसका करोड़ मतलब 1 करोड़ से थोड़ा सा कम है, और जिसका 2 करोड़ है ना, राइट. तो अब हमने ये देखा कि यहाँ की जो लैंग्वेज लैंग्वेज बेल्जियम और यहाँ श्रीलंका. यहाँ देखते हैं 59% फ्लेमिश रीजन में है and 40% German. They speak French and remaining 1% German. Sorry, guys. So 20%. Let me put here. Sorry, 1 second. And Belgium, Sri Lanka. 30% speak French, 59%. Sorry. 59% lives in Flemish region में they speak Dutch, and 40% जो Birmingham में है they speak French, and 1% they are German. 59% Dutch, 20%. Sorry, not 20%. 40% French and 1% German. अब हम उसका देखेंगे. बेल्जियम का कैपिटल ब्रसेल्स. 80% फ्रेंच, राइट, एंड 20% क्या हो जाएगा आपका टच. ठीक है, तो यहाँ पर बेल्जियम का हो गया. अब श्रीलंका को देखते हैं. तो श्रीलंका में कौन थे मतलब 18%, 74% अदर सिनारा, मतलब जो श्रीलंका लैंग्वेज है, एंड तमिल स्पीकर जो थे वो 18% है, राइट. एंड तमिल में भी दो डिवाइडेड है. तो श्रीलंका में जो तमिल है 13% है, एंड इंडियन तमिल है 5%. तो हमने लैंग्वेज उनका पूरा एथनिसिटी देखे, उनका मतलब दोनों कंट्रीज का. अब हम लोग जो मेजोरिटीज है श्रीलंका एंड अकोमोडेशन इन बेल्जियम, आज हम लोग मेजोरिटीज तक पढ़ेंगे थोड़ा सा, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग accommodation in which providing majoritism. The democratically elected government adopted a series of majoritarian policy measures to establish Sinhala supremacy. These are Sinhala as the only official language. The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. These decisions gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. The Sri Lankan parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and equality. तो अब हमने ये देखा कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट था उन्होंने एक मेजोरिटी पॉलिसी मेजर किया to establish Sinhala supremacy. तो Sinhala supremacy को establish करने के लिए government had adopted majority policy.
उन्होंने बोला कि Sinhala is the only official language and government followed, they followed some policies that favored Sinhala कि, for applicants of universities and positions. So Sinhala के लिए, application दी for universities, government jobs, for everything, right? So but क्या हो गया जो जिसकी जो decisions हैं श्रीलंकन तमिल्स को बहुत गुस्सा आ गया मतलब फीलिंग ऑफ एलियनेशन है ना फिर क्या हो गया दिस लॉन्च पार्टी एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज तो तमिल को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना था फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सिक्योरिंग जॉब्स एंड एजुकेशन तो उनको गुस्सा आ गया सो क्या हो गया 1987 organizations were formed demanding an independent Tamil Elam state in northern and eastern parts. So, 1980s में क्या हो गया था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं demanding independent Tamil Elam which is a state in the northern and eastern parts of Sri Lanka, northern and eastern parts. And क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशन के बाद एक सिविल वॉर मतलब एक वॉर में ही बदल गया राइट तो ये था अबाउट श्रीलंका मेजोरिटरिज्म इन श्रीलंका मतलब यू नो वॉर हो गया एलिनेशन हुआ अमंग सिन्हालाज जो सिन्हाला सुपरमेसी के लिए बनाना था उनके लिए मतलब वो एप्लीकेशन बने फॉर यूनिवर्सिटी जॉब्स गवर्नमेंट जॉब पोजिशन राइट तो इन श्रीलंकन तमिल को बहुत गुस्सा आ गया तो उनके बीच में वॉर हो गया तो दिस वाज अबाउट मेजोरिटी अब नेक्स्ट क्लास में हम अकोमोडेशन पढ़ेंगे एंड फॉर्म्स ऑफ पार्शियल नाउ कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूँ Yeah, this is the first question and one more question. One second, again. This is for 1 mark. Volume में Sinhala, and this is for 5 marks. So differentiate between Belgium and Sri Lanka in terms of language percentage, ethnicity, right? ऐसे तो जो हमने आज पढ़ा है आप उसको सुन लीजिए आराम से सुन लीजिए एंड अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी आप पढ़ेंगे फिर आप ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए राइट
तो मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंशिएट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका in terms of language percentage, in terms of ethnicity, right? Which is for 5 marks, and what you know singly. So आपके जो important questions हैं आप इनको आप सुन लीजिए और फिर बाद में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. So thank you guys. I'll see you soon. Next, next part मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा. And yes, I'll see you. Take care.